So in today's lecture we are going to discuss 3 chapters from physical pharmacy, that is state of matter, phase rule and colloids. So the important points for your GPAT Niper DI Pharmacist exams, those will be discussed only here, not each and everything. So first of all we will discuss state of matter. State of matter, जो matter होता है आपका, जो solid, liquid, gaseous होता है, all these are the state of matter. It's a matter, but in which state they are present, कि उसका फॉर्म क्या है, वो मैटर का फॉर्म क्या है, मैटर एग्जैक्टली मैटर होता क्या है, ठीक है. एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ योर 12th, बट स्टिल आई एम गोइंग टू कवर इट. सो एनीथिंग, any material, anything or any material that is having a mass, any material which is having a mass and that will occupies a space is nothing but the matter. Okay, so matter is anything that particular thing has a particular mass and will occupy a space, that is nothing but the matter. Now this matter can exist in a three form. Matter can exist in a different forms or different states. So there are different states for matters. Okay, so which are these? These states are nothing but the gaseous state, liquid state, then your solid state. Then it may either occur as a plasma, it may either occur as a Bose-Einstein condensate. So there are different, or matter may be appear as a supercritical fluid. So matter has a different state. Okay, so what are the main important? That is your nothing but the solid, liquid, gaseous. Okay, then plasma, then Bose-Einstein condensate. Okay, now we will discuss one by one. Now if you take an example of gaseous state and liquid state, आपको मालूम है कि गैस एंड लिक्विड और सॉलिड, ये तीनों स्टेट है मैटर के, ठीक है. ये तो तीन तो बेसिक सबको मालूम होते हैं, लेकिन उसके आगे भी कुछ है, ठीक है. तो along with your solid, liquid and gaseous state, there are other certain state of matter. These are nothing but the plasma, these are nothing but the Bose-Einstein condensate. Okay, these are also a state of matter along with your supercritical phase, supercritical fluid, that is also one of the state of matter, right? Now molecules, those lies between liquid and crystalline state. So if molecule is in between the liquid state as well as the crystalline state, then we call it as a monophase or liquid crystal. Okay, so those molecule which lies between the crystalline as well as crystalline and liquid state, it is known as a monophase or liquid crystal. Please try to focus on the cursor position of my mouse so that you will understand effectively. Now solid, what is solid state? Solid state has a mass and it will has a definite volume. Solid state will have a definite volume, it will have a definite shape. Okay, solid state will have a definite shape and on mass also, but it is incompressible. Okay, then liquid and gaseous state, both state have a little bit similarity. Both will not have any specific shape, any specific volume. Okay, any specific shape. Particularly liquid and gaseous does not have any particular shape, their own shape is not there, but they can acquire a shape of container in which they are present. Okay, जैसे मान लीजिए कि आपने एक ग्लास फुल ऑफ वाटर लिया, ठीक है, तो उसका शेप कैसा होगा, वाटर का ग्लास के शेप जैसा होगा. अगर उसी में आपने गैस ले लिया तो गैस का दिखता नहीं आपको आंखों से, बट उसी का शेप उसको आएगा. बट सॉलिड का क्या होता है, सॉलिड का एक खुद का अपना शेप होता है, ठीक है. तो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट कैन ऑक्युपाई द स्पेस. ओके, दैट कैन ऑक्युपाई द स्पेस and having particular mass, right? Now these matter can exist in a gaseous state, liquid state, solid state, then plasma state, Bose-Einstein condensate, etc. Okay, so now now gases and liquid will have no specific shape and they will occupy the shape of container in which they are present, and gases are easily compressible. Okay, gases are easily compressible. Now solid will have a definite shape. Okay, solid will have a definite shape and it is relatively incompressible. Solid is relatively incompressible. Okay, then
plasma is there, Bose-Einstein condensate is there. Okay, so those will be discussed in upcoming slide. What is plasma, what is Bose-Einstein condensate. So in upcoming slide I will try to explain these terms also. But molecule, those lies between the liquid and crystalline state, लिक्विड और सॉलिड स्टेट, इसके बीच में अगर कोई है तो उसको बोलेंगे मेसोफेज, और लिक्विड क्रिस्टल. ओके, सो विल सी द सम few important points. Supercritical fluid, that is another state that lies between the intermediate, that has a property intermediate between liquid and gases. So supercritical fluid lies a property intermediate between liquid and gases, and they are also considered as a mesophase. Okay, so temperature and pressure are the determinant for the state of matter. Temperature and pressure are the determinant for the state of matter. See, if you take a solid and if you increase the temperature of solid, so it will be converted into liquid. Take an example of ice. अगर आप बर्फ लेते हो, बर्फ को अगर हीट करेंगे तो उसका क्या होगा, लिक्विड होगा. सो टेम्परेचर इज डिटरमिनेंट. और लिक्विड को अगर हीट करेंगे तो उसका क्या होगा, वेपर होगा. सो टेम्परेचर इज अ डिटरमिनेंट. Along with temperature, pressure is also determinant for the state of matter. So who will determine the state of matter? Pressure and temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका दूसरा स्टेट में जाएगा, अगर प्रेशर कम करेंगे तो वो दूसरा स्टेट में जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो दूसरा स्टेट में जाएगा. ठीक है. सो टेम्परेचर एंड प्रेशर आर द determinant for the state of matter. Now first we will see state of matter one by one. Now first one is gaseous state. So gaseous state are nothing but they are a group of molecule. Okay, they are a group of random molecule, and they are compressible. They are compressible fluid. They will not have a definite shape or volume, and they will occupy the space in which they are present in the container. The container in which they are present, they will occupy the shape of that. Okay. Now, because in the gaseous state there is a high kinetic energy, there is no intermolecular forces, but there is a high kinetic energy. Intermolecular forces are very nil, मतलब ना के बराबर होता है intermolecular forces, but kinetic energy उसका high होता है. ठीक है. A gas below a gas at a temperature below the critical temperature is nothing but the vapor. Okay, अगर गैस को critical temperature के नीचे जो टेम्परेचर होता है उसको तब करेंगे तो उसको लेके जाएंगे तो वो वेपर में होगा. मतलब एक गैस एट अ टेम्परेचर बिलो देन द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस is nothing but the vapor. So gas will become a vapor. Vapor is nothing but it will have characteristic of liquid state as well as gaseous state. That is nothing but the vapor. Now, what is the laws that are associated with the gas? Okay, so first one is a Boyle's law. Boyle's law. What it state? It states that at a constant temperature, volume of gas is inversely proportional to the pressure. Means क्या ये इसके accordingly क्या है, ये Boyle's के accordingly क्या होता है कि at a constant टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखिए तो उसका गैस का जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के लिए. ठीक है. मतलब V is inversely proportional to 1/P. V means volume, P means pressure. So volume of gas is inversely proportional to the pressure when you keep a temperature constant. ठीक है. Relationship between temperature, volume, pressure and amount of gas held is constant. So what Boyle's law is giving information? It is giving information related to the relationship between temperature, volume, pressure, then amount of gas held constant. Okay, मतलब at a specific temperature, specific volume, specific pressure, the amount of gas will be constant. ये Boyle's law बोलता है. अभी next law कौन सा है? There are certain laws related with the gases. Now next one is the Charles law. Charles law क्या बोलता है? Constant pressure, volume. At a constant pressure, volume of gas is directly proportional to the temperature. Now Charles ने क्या किया कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा और उसने एनालाइज किया कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. मींस एट अ कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ गैस. अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा. ठीक है. अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा. लेकिन बॉयल्स लॉ में क्या हो रहा था, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे थे वो, और उसने बोला कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा. अगर प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा. स्पेसिफिक मास एंड विल ऑक्युपाई द matter. Okay, will occupy the space, that is nothing but the matter. Anything that will have mass and that will occupy a space, that is matter. It will exist in a different state or different forms, either in a solid, liquid or gaseous or
it is present as a plasma, or it may be present as a Bose-Einstein condensate. Okay, so your solid will have a definite shape, but it is relatively not compressible. But in case of liquid and gases, they will not have a specific shape. They will occupy the shape of container, and they are easily compressible. Okay, so now the molecules, those which lies in between the liquid and crystalline state, they are known as a mesophase or liquid crystals. We have seen this. I am repeating this for newcomer. Okay, then supercritical fluid is also one of the state that lies. The property of supercritical fluid lies between the intermediate between liquid and gases, and they are also considered as a mesophase. Okay, now the determinant of these states, कौन करता है state का determination? These are the three factors: temperature, pressure. These are the determinant for the state of matter. मतलब अगर एक आपके पास सॉलिड है, उसको टेम्परेचर करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वो आपका गैस बन जाएगा। अगर गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे गैस के ऊपर तो उसका लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड का प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज दैट। सो टेम्परेचर एंड प्रेशर आर द डिटरमिनेंट फॉर द स्टेट ऑफ मैटर। एक्चुअली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, लेकिन स्टिल मैं ले रहा हूँ। गैसेस स्टेट, they are compressible fluid, they will not have definite shape, they will acquire the volume of container. Okay, they will have high kinetic energy and low intermolecular forces. Okay, as a gas at a temperature below its critical temperature is nothing but the vapor, and we was discussing about the gases law, ideal gas law. So Boyle's law we have seen, at a constant temperature volume of gas is inversely proportional to the प्रेशर। ठीक है, जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ चार्ल्स लॉ एट अ कांस्टेंट प्रेशर। इसमें कांस्टेंट प्रेशर है, अभी प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या है, क्या दूसरे टर्म्स क्या है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम गैस का बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ गाय-लुसाक लॉ। गाय-लुसाक्स लॉ एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मींस अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। सो टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफ यू कीप कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ नेक्स्ट वन इज अवोगाड्रो लॉ। ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली proportional to the number of moles of gas at a constant temperature and pressure। अभी टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, अभी वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन दैट गैस। ओके, दैट इज अवोगाड्रो लॉ। तो उसके रिलेटेड और एक आपको पढ़ना है तो उसको 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू, वो एक है 0.0 कुछ तो भी है वो, तो उसको भी एक आप पढ़ सकते हो इन एडिशन टू दैट। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन सेल्डमली आएगा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन यहाँ पे जो भी बोला इसके ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन अगर आ भी गया तो कैसे आएगा कि आपको ये लॉज याद रखना पड़ेगा कि गाय-लुसाक्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, दीज लॉज आर रिलेटेड विद द गैस। ठीक है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये अगर नाम मालूम होंगे और इसके रिलेशन भी कौन है, गैस है, तो ये गैस के लॉ है तो इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ that's why I have taken this. Now liquid state, second state is liquid state. We have seen the gaseous state. Okay, now liquid, it lies between the gases and solid state. In the liquid, molecules are in a random motion. Okay, but they are less as compared to gases. In gases, molecules are also in a random motion, but they are highly in a random motion. But in case of liquid, they are, as compared to gases, they are less random in the motion. Okay, again liquid also have kinetic energy. Okay, now kinetic energy of liquid is nothing but the vapor pressure. Whatever pressure, vapor pressure, the pressure exerted by the liquid on the atmosphere is nothing but the vapor pressure. Okay, so that is the kinetic energy of liquid, and it will increase with the increase in temperature. अगर temperature liquid का बढ़ाएंगे तो उसका vapor pressure बढ़ जाएगा। ठीक है, properties like viscosity, surface tension, vapor pressure, these terms can be used to explain the attractive forces present in the liquid। अभी लिक्विड में क्या है कि लिक्विड में बल्क जो है अंदर ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक ग्लास में पूरा ऑयल ले लिया, सरफेस के ऊपर अलग बिहेव करता है लिक्विड, और बल्क मतलब अंदर, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे विल हैव
attractive forces, and because of that attractive forces you have different terms: surface viscosity, surface tension, and vapor pressure. Okay, viscosity is nothing but it is a resistant to the flow. We have seen this. Okay, viscosity is nothing but the resistant to the flow of liquid. Now next one is a surface tension. What is surface tension? So in the bulk of liquid molecule, they are attracted in every direction equally, but at the surface of attractive forces are unbalanced, and it is having higher energy state as compared to bulk. So the molecule, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? कि मान लीजिए कि आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में एक आपने लिक्विड लिया है, वाटर ले लिया है, मान लीजिए वाटर है, तो ग्लास में वाटर है, ठीक है? तो ग्लास का वाटर का ऊपर का जो सरफेस है और अंदर नीचे क्या है, तो नीचे जो है सरफेस के नीचे उसको बोलेंगे बल्क, और उसको जो ऊपर है उसको बोलेंगे सरफेस, ठीक है? सो नाउ व्हाट हैपेंस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बल्क विल हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस, ओके, जो डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, एक में के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है उनका, ठीक है? दैट अट्रैक्टिव फोर्सेस, एंड दे आर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन एवरी डायरेक्शन इन द बल्क ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है? बल्क मॉलिक्यूल में, बल्क जो होता है लिक्विड में, उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल का एट्रैक्टिव फोर्सेस सभी डायरेक्शन में आता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, ठीक है, उसको क्या होता है कि उसको सभी डायरेक्शन से वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है? तो क्या होगा कि जो बल्क ऑफ लिक्विड है उसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा होगा, कहाँ से? सरफेस पे ऊपर वो जो मॉलिक्यूल है उससे, तो द लिक्विड विल फील इनवर्ड पुल, और इनवर्ड पुल मतलब नीचे की तरफ खींचेगा वो अट्रैक्टिव फोर्सेस, ओके? एंड दैट्स व्हाई द लिक्विड विल टेंड टू compress, ठीक है? Liquid will tend to compress. Now to counteract this, whatever force is applied that force is nothing but the surface tension, okay? So I will read it again. In the bulk of liquid molecule, molecules are attracted in every direction equally, but at the surface attractive forces are unbalanced, and it is at a higher energy state as compared to bulk. So molecules at the surface experience inward pull, that is nothing but the tension, because of greater number of molecules per unit volume is present in the liquid than in the vapor, okay? Because of this liquid tends to contract, and the force which counteract this tension is known as the surface tension. Now vapor pressure, that is nothing but the pressure exerted by vapors of liquid which is in equilibrium with its condensate, मतलब its liquid form. So whatever pressure exerted by the vapor on the surface of liquid, that is in equilibrium with the liquid, that is a condensate point. So that is nothing but the vapor pressure. Now there are more two terms, evaporation and condensation, ठीक है? मतलब vapor pressure अगर बढ़ाएंगे तो evaporation क्या होगा उसका। अगर vapor pressure बढ़ाएंगे तो जल्दी से वो liquid evaporate हो जाएगा, अगर vapor pressure कम करेंगे तो वो लिक्विड कंडेंसेट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कम्स हियर, ओके? द रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय Clausius-Clapeyron equation. The relationship between vapor pressure and absolute temperature is given by Clausius-Clapeyron equation. ये आपको लाइन बाय हार्ट याद रखनी है, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? इसके ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, आई थिंक ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है? तो ये इक्वेशन अगर आपको देखना है तो यू कैन गो इन द बुक एंड यू कैन रीड. सो इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट दिस you can read, but I think that is not much important for GPAT. So for the GPAT Niper, you just remember relationship between vapor pressure and absolute temperature is given by Clausius-Clapeyron equation, okay? ये याद रखो. Now next one is the solid state. Solid state क्या होता है? Molecule in the solid state they are packed together having strongest intermolecular force of attraction, ठीक है? So least intermolecular force of attraction is present in the gaseous state. After that gases में सबसे कम intermolecular force of attraction होता है, मतलब वहाँ पे random molecule घूमते रहते हैं gases में, ठीक है? और liquid में क्या होता है, उनका एक थोड़ा सा attractive forces gases से ज्यादा होता है, लेकिन solid से कम होता है, ठीक है? So solid में क्या होता है कि सबसे ज्यादा होता है. So molecules are packed together, they are having strongest intermolecular forces of attraction.
okay, and these solids will have a definite shape and maintain their volume independent of the container. मतलब सॉलिड मटेरियल जो है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है उसका अपना, ठीक है। कंटेनर में आप मान लीजिए आपने गुड़ का एक छोटा सा पीस ले लिया, ठीक है, और आपने ग्लास में डाल दिया, तो ग्लास का शेप तो नहीं आएगा उसको तो खुद का शेप है ना, ठीक है। एंड दिस सॉलिड मटेरियल आर रिलेटिवली लेस कॉम्प्रेसिबल, ये कॉम्प्रेसिबल नहीं होते, एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी is 10 times more than the gases. Gases are easily compressible. Liquid are compressible, but solids are relatively less compressible or incompressible. Heating mostly, on heating, the solids will mostly melt, and some of them will undergo sublimation. So that is another thing. कि अगर आप solid को heat करेंगे, तो most of the solid they will melt in the form of liquid. बट कुछ सॉलिड ऐसे होती है कि उनको हीट करेंगे तो डायरेक्टली वेपर बन जाएगा उसका, दैट इज सब्लिमेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड. व्हाट डू मीन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड? सो मॉलिक्यूल्स व्हिच आर पैक्ड इन अ ऑर्डरली मैनर, मॉलिक्यूल्स व्हिच आर पैक्ड इन अ सिस्टेमिक मैनर, मॉलिक्यूल्स व्हिच आर पैक्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डरली मैनर, दे विल हैव अ लोअर एनर्जी एंड देयरफॉर दे विल हैव अ लो solubility. Remember, this is very important. Most of the students they get confused between this. Okay, so which form of compound will have better solubility? ठीक है, क्रिस्टलाइन, एमोरफस, मेटास्टेबल, तो ऐसा कुछ आता है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दे आर ऑर्डरली अरेंजमेंट, देयर इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द क्रिस्टल, मींस सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द क्रिस्टल, and therefore they will have less energy, and as they will have less energy they will have low solubility. मतलब ये कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि नहीं यार क्रिस्टलाइन फॉर्म ज्यादा सोल्यूबल होगा, नहीं वैसा नहीं होता, एमोरफस फॉर्म ज्यादा सोल्यूबल होता है, ठीक है। सो दे विल हैव अ लोअर एनर्जी एंड दे विल हैव लो सोल्यूबिलिटी एट अ temperature by which crystal lattice breaks is nothing but the melting temperature of crystal, and it will this crystalline form of molecule or this crystalline form of solid will have sharp melting point. इतना याद रखो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसमें ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, उसका एनर्जी कम होता है और सॉल्युबिलिटी कम होता है उसका, ठीक है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, ठीक। देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रिस्टल, सम क्रिस्टल विल बी क्यूबिक, सम विल बी हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ये शेप कैसे होते हैं ये आप बुक में देख लो, ठीक है, उसका डायग्राम दिया हुआ है, ये आप डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। Now, what are the types of crystal? This is also one of the important point. Okay, so types of crystal. After crystal, we will see amorphous. Okay, first we will complete the crystal. So we have seen the crystalline solid. What is it? How it is packed, and what is the solubility? Now next one is the types of crystal. So first one is a molecular crystal. ठीक है. So in the molecular crystal, particle component held by weak attractive forces. जो मॉलिकुलर क्रिस्टल होते हैं उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो उसका अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होता है और वीक अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से लूजली बाउंड होते हो, ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस जो जिसको बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आइस, ड्राई आइस है, वैक्स है, आयोडीन है, आपका सल्फर है। सो दीज क्रिस्टल्स दे आर नथिंग बट द मॉलिकुलर क्रिस्टल्स, ड्राई आइस, वैक्स, आयोडीन एंड सल्फर। नाउ नेक्स्ट वन इज अ ionic crystal. Okay, ionic crystal, this was question in GPAT 20 or 21, I don't remember, but there was a question. Okay, so now second type of crystal is a ionic crystal. So what happens in this? So as the name indicates, ionic means what? Ions, positive or negative. So positive and negatively charged ions, they are arranged in a regular fashion or systemic manner in the crystal, and they are held together by strong electrostatic force. Okay, these are nothing but the ionic crystal, and these kind of crystal will have crystal are very hard, brittle, and they will have a high melting point, boiling point. Okay, for example sodium chloride, lithium chloride, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, इनका जो क्रिस्टल है सो दे आर अ टाइप ऑफ आयनिक क्रिस्टल. ओके, एंड दिस वाज क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल आर अ टाइप ऑफ, और आपको ऑप्शन दिए थे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 2-3 ऑप्शन दिए. अभी नेक्स्ट वन इज अ कोवैलेंट क्रिस्टल. Next one is a covalent crystal. So particles of atom held they are held in a network by a covalent bond. Okay, so particles of molecule they are held together by a covalent bond in a network, and they are hard, incompressible. They are nothing but the covalent crystal.
Okay, most of them are non-volatile and they will have a high melting point. For example, in case of diamond, carborundum, that is silicon carbide, and quartz, that is silicon dioxide. So these are the example of covalent crystal. इसका टाइप एंड क्रिस्टल का कौन सा क्रिस्टल किसका टाइप है ये याद रखना है कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में क्या आता है, आइस, वैक्स, आयोडीन, देन सल्फर. आयनिक क्रिस्टल में क्या आता है, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड. कोवेलेंट क्रिस्टल में क्या है, डायमंड एंड योर सिलिकॉन कार्बाइड एंड क्वार्ट्ज. ठीक है. देन नेक्स्ट टाइप इज अ मेटालिक क्रिस्टल. Okay, so as the name indicates, metallic crystal. So most of the metal they will have a metallic crystal. So particle constituents are a positive kernels. मतलब इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियाई जो पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए, they are nothing but nuclei in which electrons are dispersed as a sea of molecule valence electron. ये छोड़ो, नहीं समझ में आया तो छोड़ो. ये इतना याद रखो कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स, तो उसमें कौन सा क्रिस्टल टाइप होता है, मेटालिक क्रिस्टल होता है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल, फोर्सेस प्रेजेंट इन द क्रिस्टल आर मेटालिक बॉन्ड्स. फॉर एग्जांपल, निकेल, कॉपर, alloy. So nickel, copper alloy will have metallic crystals. Then silicon dioxide, that is quartz. Silicon carbide, that is a carbonadum. Then diamond, they will have covalent crystals. Then sodium chloride and lithium fluoride will have ionic crystals. Dry ice, wax, iodine, sulfur, they are nothing but the molecular crystal. So is that clear? Now polymorphism. What is meant by polymorphism? Now some part of your pre-formulation also will be covered in this session, but we will take pre-formulation separately. Don't worry. So polymorphism is nothing but it is the ability of compound or crystal. It is ability of compound to crystallize in a different form. Okay. Polymorphism क्या होता है कि एक कोई कंपाउंड है वो डिफरेंट क्रिस्टलाइज फॉर्म में अगर क्रिस्टलाइज होता है तो उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म. सो इट इज एबिलिटी ऑफ कंपाउंड टू क्रिस्टलाइज मोर देन वन डिस्टिंक्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म विद डिफरेंट इंटरनल लैटिसेस. इंटरनल लैटिस मतलब क्रिस्टल का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं लैटिस, और बहुत सारे लैटिस एक में के साथ जुड़ के क्रिस्टल बनता है. ठीक है. मोस्टली पॉलीमॉर्फिज्म इज फाउंड इन द क्रिस्टल्स ऑफ मेटल्स, मिनरल्स, पॉलीमर्स एंड एलोटॉपी. ये क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स, मेटल्स एंड पॉलीमर्स जो होते हैं वो मोस्टली पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं. अभी मिनरल्स में क्या आता है, आपका ड्रग्स भी आता है. ठीक है. सो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कंपाउंड विल हैव डिफरेंट फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा. ठीक है. दूसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म का फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज अलग होगा. तो फॉर एग्जांपल, chloromphenicol palmitate. Chloromphenicol is a antibiotic, aminoglycoside antibiotic, and that chloromphenicol palmitate is having 3 polymers: polymorph A, polymorph B, and polymorph C. So out of these 3, polymorph B has a more solubility and that's why it has a more bioavailability. So polymorph B अगर है present तो उसका bioavailability अच्छा होगा, उसका इफेक्ट भी अच्छा होगा. लेकिन अगर polymorph A और C है तो उसका bioavailability कम होगा और इफेक्ट भी कम होगा. So that's why the study of polymorphism is important in our pharma field. Okay. So you must be clear about that. There are numerous example. For example, is your coca butter. Suppository अगर बनाते हो तो उसमें जो बेस यूज करते हैं कोका बटर, उसका भी डिफरेंट क्रिस्टल होता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है. सो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, उसका 4 क्रिस्टल होता है. So out of these 4, beta crystal is very stable to it. This is the polymorphism. Again we will see this polymorphism in the our pre-formulation studies. Diamond and graphite is the most common example of polymorphic form of crystal composed of the same material but having different properties. मतलब ये जो ग्राफाइट है या डायमंड है वो एक से ही बनता है, एक ही मटेरियल है उसका, कार्बन. ठीक है. कार्बन से ही बनता है. लेकिन डायमंड का प्रॉपर्टीज अलग है, ग्राफाइट का प्रॉपर्टीज अलग है. डायमंड का वैल्यू अलग है, ग्राफाइट का वैल्यू अलग है. ठीक है. Amorphous solid. We have seen the crystalline solid. Under the crystalline, polymorphism is there. Now second one is the amorphous solid. So what do you mean by amorphous? Molecules of particles that are randomly arranged and they will have high energy and that's why they will have high solubility. कि crystalline solid में एक proper arrangement of particles था, orderly arrangement of particles, systemic arrangement of particles. That's why there is a less energy and that's why there is a less solubility in case of crystalline. लेकिन amorphous में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं क्रिस्टल में, इसका एमोर्फस में, वो रैंडमली अरेंज होते हैं. रैंडमली अरेंज होने के कारण उसका एनर्जी ज्यादा होता है और एनर्जी ज्यादा होने के कारण उसका सोलिबिलिटी ज्यादा होता है. ओके. सो एमोर्फस मॉलिक्यूल
in the molecule, particles will be randomly arranged and they will have high energy, and in turns they will have high solubility. Okay, and this amorphous solid will not have a definite shape, but crystalline solid will have a shape, proper shape. Okay, so amorphous solid will not have a definite geometrical shapes, and they will not have a sharp melting point. Amorphous solids are sometimes called as super cooled liquids because they will look like a liquid, they will flow like a liquid. Okay, so amorphous solids sometimes they are known as a super cooled liquid, or because they are flowing like a liquid. amorphous देखो आप, amorphous पाउडर देखेंगे आप तो मतलब लिक्विड जैसे ही होता है वो, और क्रिस्टलाइन क्या होता है, सॉलिड टाइप होता है और उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है. सो ये याद रखो कि amorphous फॉर्म ऑफ ड्रग विल बी ऑलवेज हैव बेटर सोलिबिलिटी देन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ड्रग. ठीक है. नाउ आपको बीच में एक दूसरा वर्ड देते, क्या देते कि आपको बोलते हैं कि ऑर्डर द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी, और आपको देंगे ए क्रिस्टलाइन, बी मेटास्टेबल, सी एमॉर्फोस. ठीक है. तो याद रखो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है उसको सोलिबिलिटी कब सबसे कम होती है, मेटास्टेबल फॉर्म जो है उसको क्रिस्टलाइन से सोलिबिलिटी ज्यादा होती है लेकिन एमॉर्फोस से कम होती है. ठीक है. और एमॉर्फोस जो है उसको सबसे ज्यादा सोलिबिलिटी होती है. ठीक है. सो क्रिस्टलाइन विल हैव लेस सोलिबिलिटी देन मेटास्टेबल एंड आफ्टर दैट एमॉर्फोस. ओके. यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है सोलिबिलिटी किसका ज्यादा है किसका कम है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड स्टेट. we are discussing the state of matter. Now next one is supercritical fluid state. Okay, so properties of these supercritical fluid lies between the liquid and gases. Okay, when gas is heated to its critical temperature, liquefaction of gas without significant increase in the viscosity, that is nothing but a supercritical fluid. मतलब क्या, एक गैस है, गैस का प्रॉपर्टी अलग है, लिक्विड का प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन ये सुपरक्रिटिकल फ्लूइड जो होता है उसमें क्या है कि बिहेव तो गैस जैसे करता है वो, मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड विल लुक लाइक द गैस बट इट विल हैव प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड. लिक्विड का क्या प्रॉपर्टी है कि सोल्युबलाइजेशन. ठीक है ना. आपने कुछ शुगर है, वाटर में क्या होगा, सोल्युबल होगा, तो किसका प्रॉपर्टी है सोल्युबलाइजेशन, लिक्विड का. बट सुपर क्रिटिकल फ्लूइड दे विल लुक लाइक यूर गैसियस स्टेट बट दे विल हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड लाइक अ सोल्युबिलिटी. And that's why supercritical fluid they are very good. They are used in the extraction technique. Supercritical fluid chromatography, supercritical fluid extraction, etc. Okay, so that is supercritical fluid. Carbon dioxide and water they are the most commonly used supercritical fluids. Now plasma. What do you mean by plasma? We was discussing the state of matter: solid, liquid, gaseous, then supercritical state, then plasma, then or there is one more. So what is plasma? Plasma is nothing but the ionized gas. Ionized gas. So gas is ionized by giving sufficient energy to free the electrons of gas from the atom of molecule. So you will have ions and electrons in the same. They will coexist. Ions and electrons will be coexisted in the gas, and that gas is known as a plasma. Plasma is similar to gas but its atoms are made up of free of electrons and ions. जो atoms होते हैं गैस के उसके इलेक्ट्रॉन फ्री कर देंगे और आयंस फ्री कर देंगे तो उसको बोलेंगे प्लाज्मा. ओके, इट्स वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. सो व्हाट इज इट? इट इज अ gaseous super fluid. It is a gaseous super fluid phase and found by atom cold temperature. Okay, found by atom cold temperature near to the zero, absolute zero. कि गैस जो है उसको absolute zero टेम्परेचर पे रखेंगे और उसका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बनाएंगे तो उसको बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर. ज्यादा मत पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना याद रखो. नाउ नेक्स्ट वन इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज अ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. कैसे होगा चेंज? बाय यूजिंग टू डिटर्मिनेंट, दैट इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर. अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर घटाएंगे तो क्या होगा. सो दैट इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. ओके, सो इट कैन बी डन बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. अगर गैस है उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लिक्विड हो जाएगा. और सेम कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. गैस कैन बी लिक्विफाइड बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग द pressure. Now what, there are certain definition. What is meant by critical temperature?
the temperature above which liquefaction of gases will not take place, that is known as a critical temperature. Then critical pressure, the minimum pressure required to liquefy the gas, that is a critical pressure. Then critical volume occupied by 1 mole of gas at a critical temperature and pressure, okay, that is known as a critical volume. याद रखो critical temperature क्या है कि टेम्परेचर ऐसा एक टेम्परेचर है कि जिसके आगे गैसेस का लिक्विफिकेशन नहीं हो सकता, मतलब लिक्विफिकेशन होने के लिए उतना मिनिमम टेम्परेचर उससे नीचे ही जाए तभी लिक्विड फॉर्म में रहेगा गैस, वो टेम्परेचर क्रॉस किया तो वो गैसेस में जाएगा, दैट इज अ क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल प्रेशर, इट इज अ मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर. नाउ क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस एट अ volume occupied by gas by 1 mole of gas at a critical temperature and pressure, that is a critical volume occupied by 1 mole of gas at a critical temperature and pressure, that is nothing but the critical volume. Next one is now method used to liquefy the gases. There are different methods that are used to liquefy the gases, that is a Faraday's method, Linde's method and Claude's method. Okay, so if you want to read in the detail about this method, you can read from the book. I will give you name of book. Just don't read बड़े बुक्स पढ़ने का आपको absolutely not required. Just read one book, फिजिकल फार्मेसी बाय डेडले, डॉक्टर डेडले, ठीक है. एक फार्मामेड पब्लिकेशन का बुक आता है फिजिकल फार्मेसी बाय डेडले, जो एनडीएमपी नासिक का कॉलेज है, उनके यहाँ प्रोफेसर है वो डेडले. उनका एक छोटा सा बुक आता है फिजिकल फार्मेसी का, दैट इज द बेस्ट. ओके, अगर आपको मार्टिन नहीं पढ़ना है तो, अगर आपको सीवीएस सुब्रमण्यम नहीं पढ़ना, सीवीएस सुब्रमण्यम में कैसा है 2 वॉल्यूम है, फर्स्ट वन सेकंड वन, दोनों अगर पढ़ेंगे तो अच्छा रहता है, लेकिन नहीं भी पढ़ा तो एटलीस्ट डेली पढ़ लो. नाउ बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट? टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. Okay, so vapor pressure will become equal to the atmospheric pressure. At that time, the liquid will start boiling. That is known as a boiling point.